Class 12, Subject Education, Chapter 2, Buddhist Education. So our topic for today is Organization of Buddhist Education. Buddhist education and learning centered around monasteries. The Buddhist world did not offer any educational opportunities apart from or independently of its monasteries. All education, sacred as well as secular, was in the hands of monks. See, Buddhist education is straightly related to monasteries. Everything is in the hands of monks. Monks are the people who give education to their students. The Buddhist system of education can be divided into the following types of educational organizations. Here they are divided education into two parts. First is primary and second is higher. Primary means starting of the education or the basic education. So there are some points in this. Number one, general education introduction. The popular Jatak tales tell us about the organizational setup of primary education in Buddhist period. The education was offered to every man and woman of all castes and classes without any distinction. The education is absolutely of religious nature. See, in general introduction, we found a tale called Jatak tales. जो जातक टेल्स थी उससे हमें क्या पता चलता है बुद्धिस्ट पीरियड में जो प्राइमरी एजुकेशन का सेटअप हुआ, मतलब कहाँ से इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्या क्या इसमें था. सो इन बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज ऑफर्ड टू एवरी मैन एंड वुमन, यानी कि देयर वर नो डिस्क्रिमिनेशन. एजुकेशन सबको दिया जाता था ऑफ ऑल कास्ट एंड क्लासेस. पूरी तरह से आप कह सकते हैं इक्वालिटी थी. We found equality in Buddhist education. No discrimination or no distinction. हर कास्ट के हर क्लास के लोगों को एजुकेशन मिलता था. और एजुकेशन कैसा था? द एजुकेशन इज एब्सोल्युटली रिलीजियस नेचर. नेचर में कैसा था? रिलीजियस था. जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, धार्मिक, बिकॉज धर्म वॉज द बिगेस्ट एम ऑफ देयर लाइफ. नंबर टू, एडमिशन. द प्राइमरी एजुकेशन स्टार्टेड एट द एज ऑफ 6. कब स्टार्ट होता था ये? 6 साल के एज में. पॉइंट नंबर 3, करिकुलम. सी, हियर वी फाउंड अ बुक नेम्ड सिद्धिरस्तु. So in this they have to read this book Siddhirastu for 6 months. In this book there were 12 chapter and 49 alphabet. These letter form and formulate 300 hymns, means bhajan. After 16 months, the students used to study grammar, logic, medicine, metaphysics, arts and craft, etc. Thus the curriculum was a best blend of worldly and non-worldly education in one's life. सी, इसमें क्या होता था कि 6 मंथ्स तक इनको ये बुक पढ़ना होता था जिसका नाम था सिद्धिरस्तु. इसमें देयर वर 12 चैप्टर एंड 49 अल्फाबेट्स और 300 हाइम्स. दीज लेटर फॉर्म एंड फॉर्मुलेट 300 हाइम्स. आफ्टर 16 मंथ क्या होता था? स्टूडेंट स्टार्ट करते थे स्टडी ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, मेटाफिजिक्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट. So like this was a best blend of worldly and non-worldly education. यानी कि एक पर्सन के लाइफ में इस तरीके से सबसे बेस्ट ब्लेंड यानी मिक्सचर था. कौन से एजुकेशन का? वर्ल्डली और नॉन वर्ल्डली. नंबर 4, टीचिंग मैथड्स. इमिटेशन, रेसिटेशन, ड्रिल वर्क एंड मेडिटेशन वर द ways of oral lecturing in this period. The children also wrote on the barks of trees and bhojpats, etc. See, their main focus was on oral lecturing. We find so many ways like imitation, recitation, drill work, meditation. इनके थ्रू ये क्या करते थे? oral lecture लेते थे. इसके अलावा the children also wrote on the barks of the trees. trees के barks पे भी ये लिखते थे, भोजपत्र पे भी ये लिखते थे. But more ये कैसा education लेते थे? Through oral. Number 5th and the last point of primary education. Medium of instruction. Prakrit and Pali, the languages of common masses, were the medium of instruction during this period. See, we found 2 languages, Prakrit and Pali. These both languages were the medium of education और instruction. यानी इन 2 लैंग्वेज के थ्रू ये क्या करते थे? एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, इंस्ट्रक्शंस को देते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड. So these all were the important points of primary education. That's all for today. Thank you so much.